Hello, students. A very good morning to everyone. This is the beautiful of science and technology. So today we are going to see the next session of our chapter. So in the chapter already we discussed different parts of plants like a stem, leaves. Already we discussed. So now in this session we are going to discuss about the structure of a flower and what are the functions of flowers and what are the parts of flowers. We will explain with the help of a label diagram. So with the help of a systematic label diagram, we explain the each and every parts of a flower. तो आज के सेशन में हमें क्या हो तो फ्लावर के बारे में क्या है डिस्कशन कर लेना है। फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, उसमें कौन से पार्ट्स रहते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन है, इसके बारे में हमें क्या है डिस्कशन करना है। सो इन द लास्ट सेशन ऑलरेडी वो डिस्कस what is the function of a leaf in the plant and what is the main role of a leaf for plants. तो प्लांट्स के लीफ का और लीव्स का क्या क्या मेन रोल है, इसके बारे में हमने क्या है ऑलरेडी डिस्कशन किया है। सो नाउ टुडे इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द parts of a flower and the functions of a flower. You know, so let's start. Flowers make a plant beautiful. We know that. Flowers make a plant beautiful. जब अपना एक plant है वो खूबसूरत किसको से दिखता हो तो due to the only presence of flowers. We grow different kinds of the plants for the flowering. हम अलग अलग प्रकार के जो plants grow करते हैं किस लिए? For a different kinds of flowers. Flowers vary in size, shape, color, and scent. Now see. So flowers are also vary in the shape, size, and also in the scent. Since the flower helps in the reproduction, we call it a reproductive organ of the plant. Now see. So flower is called as the reproductive organ of plants. It's playing an important role in the reproduction of a flower. जो फ्लावर का रिप्रोडक्शन होता है वो किसके माध्यम से होता है बोलो तो विद हेल्प ऑफ ओनली फ्लावर्स. आफ्टर पॉलिनेशन and fertilization, the flower produce their fruit. Now see. So flower produce the fruit after the reproduction and the pollination. जब उनका pollination होता है, fertilization होता है, होने के बाद ही flowers क्या होते हैं, fruits को क्या है produce करते हैं. Fruits enclose the seeds, seeds produce new plants. Now see. जब अपना fruits रहता है, fruits enclose the seeds, seeds produce the new plants. सीड्स के माध्यम से एक नया प्लांट्स क्या होता है रेडी होता है. Thus flowers are important in the making seeds now. So flowers are the very important for the production of different kinds of the seeds in the each and every plants. Listen. So flowers make a plant beautiful. We grow different kinds of the plants for the different kinds of the flowers. So flowers are varies in the shape, size, and the scents. That's why flowers play an important role in the reproduction. After the pollination and the fertilization, flowers produce the fruits. And fruits encloses the seeds. So with the help of new seeds, we grow the different kinds of the plants. जो एक seeds के माध्यम से ही उन्हीं के माध्यम से क्या बोलते हैं हम एक नए plants को क्या है रेडी कर सकते हैं. So flowers are the very important making in the seeds. तो प्लांट में जो सीड्स अलग अलग जो सीड्स बनते हैं वो किसकी वजह से ड्यू टू द ओनली प्रेजेंस ऑफ अ फ्लावर. लिसन नाउ सी. रफ्लेसिया फ्लावर इज द बिगेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड. दुनिया में सबसे बड़ा कौन सा फ्लावर है बोलो तो रफ्लेसिया. ध्यान में रखिए, रफ्लेसिया इज द बिगेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड. व्हिच इज द बिगेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड इज अ रफ्लेसिया एंड डकवीड. नाउ सी. डकवीडिया वेल्फिया. The tree, yeah, Olfia is the smallest flower in the world. Rafflesia is the biggest flower in the world, and the tree Olfia is the smallest flower in the world. तो पूरे विश्व भर में अपना क्या बोलते हो Rafflesia क्या एक biggest flower. It is the biggest flower in the world, and
duckweed and the wolfia is the smallest flower in the world. Smallest flower in the world. Listen. Now see, next one concept is the parts of the flower. अब हम discussion कर लेंगे. What are the parts of the flower? Each flower has a slender stalk called as the pedicel. ध्यान में रखिए. तो हर एक फ्लावर को क्या रहता है, उसका स्टाक रहता है, उसको हमें क्या कहना है तो पेडिकल कहना है. It is called as the pedicel. Listen. Now see, each flower has a cylinder like stalk called as the pedicel by which it is attached to the stem. ध्यान में रखिए, जो स्टेम को जो अटैच रहता है अपना पेडिकल का, जो अपना फ्लावर का जो पेडिकल रहता है. और फ्लावर विथआउट ए पेडिकल इज सेड टू बी द सेसिसल. ध्यान में रखिए, जो विथआउट पेडिकल जो फ्लावर रहता है उसको हमें क्या कहना है तो सेसिसल कहना है. द पेडिसल इज स्लाइटली एनलार्ज्ड एंड इट्स टिप ऑफ द फॉर्म क्वेश्चन लाइक अ पार्ट लाइक अ थैलेमस एंड द रेसिडुअल्स. फ्रॉम द थैलेमस arises the various parts of the flower in four set of flowers, one within the other. These are the known as the floral parts of there. Now see, there are totally four floral parts of a flower. One is sepals, petals, and the stamen and the pistil. तो फ्लावर्स के क्या बोलते हो, अलग अलग उसमें क्या बोलते हो पार्ट्स है. तो वन बाय वन उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन कर लेंगे. नाउ सी फर्स्ट वन सेपल्स. The floral parts of the flowers are the first one is sepals. First one is sepals. Now see sepals. The sepals form the outermost part of the flower. Now see, sepal is the outermost part of the flower. Understand? जो अपना sepal रहता है वो क्या, it is the outermost part of the flower. They look like small leaves at the base of the flower. Now see, they look like small leaves at the base of the flower. तो हमारे फ्लावर का जो बेस रहता है उसमें स्मॉल लीव्स की तरह हमें नजर आता है. Their function is to protect the flower bud. So what is the function of the special? Sepals play an important role for the protection the flower bud. जो फ्लावर के बड रहते हैं उनको प्रोटेक्शन करने का काम कौन करता है तो सेपल्स करता है. The sepals are free, in others they are joined together. Now see, in some flowers the sepals are free. कुछ फ्लावर्स में क्या बोलते हो सेपल्स क्या है, फ्री रहते हैं, और कुछ फ्लावर्स में क्या बोलते हैं ज्वाइंड टुगेदर. लिसन. नेक्स्ट वन सी पेटल्स. अब तक हमने पढ़ा सेपल्स के बारे में. नाउ सी पेटल्स. The petals are the prominent or showy parts of the flower. Now see, petals are the prominent and the showy part of the flower. ये फ्लावर्स का क्या बोलते हैं, prominent part है और एक क्या है, दिखाऊ पार्ट है. They protect the stamen and the ovary. ध्यान में रखिए, they protect the stamen and the ovary, the male and the female reproductive parts of the respectively. जो फ्लावर्स के मेल और फीमेल पार्ट्स रहते हैं उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है तो अपना क्या है पेटल्स कर लेता है. इन सम फ्लावर्स द पेटल्स आर फ्री, इन अदर्स आर जॉइंट टुगेदर. कुछ फ्लावर्स में क्या होता है जॉइंट रहते हैं और कुछ फ्लावर्स में क्या होता है फ्री रहते हैं. नेक्स्ट वन सी स्टैमेंस. अब नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा वो क्या होगा अपना स्टैमेंस. स्टैमेन. Stamens are the male part of the flower. ध्यान में रखिए, stamens are the male part of the flower. जो अपना stamen है वो क्या बोलते हैं, it is the male part of the flower. They usually surround the pistil. वो किसकी सराउंड में रहता है बोलो तो pistil के सराउंड में रहता है. Each stamen consists of two parts, filament and the anther. ध्यान में रखिए, stamen के क्या होते हैं दो पार्ट्स रहते हैं. One is a stamen and next one is a one is a filament and the one is a anther. When ripe, stamen head of the anther contains some fine yellow powder known as a pollen. जो हमारे स्टैमेन के ऊपर जो पाउडर के जैसे आ जाता है उसको हमें क्या कहना बोलो तो पोलन ग्रेन्स कहते हैं. इट इज कॉल्ड एज द पोलन ग्रेन्स. नेक्स्ट नाउ सी पिस्टिल. जो आपका फोर्थ पार्ट रहेगा वो क्या आएगा पिस्टिल. नाउ सी पिस्टिल इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. ध्यान में रखिए, स्टैमेन इज द मेल पार्ट. ये क्या होता है अपना मेल पार्ट है and pistil is the female part. Pistil is the female part of the flower. It consists of the stigma and the style and the ovary. ध्यान में रखिए,
So pistil consists of stigma, style एंड ओवरी। इसमें क्या क्या रहता है तो स्टिग्मा रहता है, स्टाइल रहती है और क्या है ओवरी है। और स्टेमिन में क्या रहता है तो इट इज कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर, फिलामेंट एंड एंथर, filament and anther. So pistil consists of the stigma, style and the ovary. The stigma is the sticky surface at the top of the pistil. ध्यान में रखिए स्टिग्मा क्या बोलो तो एक स्टिकी सब्सटेंस रहता है, ये किसके टॉप में रहता है दोस्तों, स्टॉप ऑन दी pistil. It traps and holds the pollen grains. ध्यान में रखिए स्टिग्मा क्या करता है, it traps the pollen grains. Inside the ovary the little eggs called as the ovule. जो ओवरी में छोटे छोटे जो अंडे रहते हैं उसको हमें क्या कहना बोलो तो पोल्स कहना है। Now see, in most flowers, all the four types of four parts, sepals, petals, stamen, and the pistil are present. Such a flowers are called as the complete flowers. So, what is the meaning of a complete flowers? Those flowers having the four parts like a sepal, petals, stamen, and the pistil. जिस फ्लावर में सेपल्स रहते हैं, पेटल्स रहते हैं, स्टैमेन रहते हैं, पिस्टल रहते हैं, उसको क्या होता है कंप्लीट फ्लावर कहा जाता है। Listen. All the four parts like sepals, petal, pistil and the stamen, such a flowers are called as the complete flower. For example is the गुलमोहर, जो गुलमोहर का फ्लावर है उसको हमें क्या कहना है कंप्लीट फ्लावर कहना है। इन सब फ्लावर्स वन और मोर पार्ट इज मिसिंग। कुछ फ्लावर में क्या होता है पिस्टिल नहीं रहता है, पेटल्स नहीं रहता है, स्टिग्मा नहीं रहता है या सेपल्स पेटल्स नहीं रहते हैं, उसको हमें क्या कहना है इनकम्प्लीट प्लांट्स का फ्लावर्स कहना है। In some flowers, one or more part is missing. Such flowers are called as the incomplete flower. Example, date palm, mulberry, and maize etc. हमारे जो मक्का का फ्लावर रहता है उसमें क्या बोलते हैं सबसे पार्ट्स मिस रहना, या तो क्या है सेपल्स नहीं रहना, पेटल्स नहीं रहना, या पिस्टिल नहीं रहना, स्टेमन नहीं रहना, जो एक पार्ट्स उनमें मिस रहता है उसको हमें क्या कहना है इनकम्प्लीट फ्लावर कहना है। अंडरस्टैंड? Complete and the incomplete flower. So what are the difference between the complete and the incomplete flower? Those flowers having the four parts like sepals, petals, stamen and the pistil are called as the complete flower. जिस फ्लावर में चार पार्ट रहते हैं, कौन से ध्यान में रखिए। फर्स्ट में अपना सेपल्स, जिस फ्लावर में चार पार्ट्स रहेंगे कौन से पार्ट से ध्यान में रखिए। फर्स्ट वन इज sepals, number 2 is petals, number 3 is stamens, number 4 is pistil. Now see, those flowers having the four parts are called as the complete flower. Complete flower. जिस फ्लावर में ये चारों पार्ट रहते उसको हमें क्या कहना है कंप्लीट फ्लावर का। फॉर एग्जांपल, इफ एनी प्लांट मिसिंग एनी वन पार्ट, अगर किसी फ्लावर में अगर इन चारों में से अगर कोसा तो एक पार्ट अगर नहीं रहता है तो उसको हमें क्या कहना बोलते तो इनकम्प्लीट फ्लावर कहना है। इट इज कॉल्ड एज द इनकम्प्लीट फ्लावर। इफ एनी फ्लावर मिसिंग द स्टिल या स्टैमेन या पेटल्स या सेपल आर कॉल्ड एज द इनकम्प्लीट फ्लावर। Listen. Next one, see. What is the meaning of a pollination? So, what is the meaning of a pollination? Our discussion कर लेंगे pollination. Pollination. Now see, transfer of a pollen grains from the anther to the stigma is called as the pollination. ध्यान में रखिए pollination is the process. So in this process, transfer the pollen grains from a anther to the stigma. जो pollen grains रहते हैं वो anther से stigma के पास क्या करना ट्रांसफर करना, उसको हमें क्या करना बोले तो pollination करना है। The ovule becomes the seed and the ovary becomes the fruit after the fertilization. Now see, after the fertilization the ovule becomes the seeds and ovary becomes the fruit. जब फ्लावर में रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन होने के बाद ओवल का क्या होता है सीड्स में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन।
Ore is converted into the seeds. And now next one, see, ore becomes the fruit. Okay, now see what is the meaning of pollination. Transfer of a pollen grains from the anther to the stigma of a flower is called as the pollination. ध्यान में रखिए. So pollination is the process. So in this process, transfer the pollen grains from the anther to the stigma is called as the pollination. So after the fertilization in the flower, holes become seeds, and now see ori becomes the fruit. So the last one concept is what are the functions of a flower. हम डिस्कशन कर लेंगे. What are the functions of a flower? What are the functions of a flower? Functions of flower. Now see. So what are the main functions of flowers? Now see. Flowers help in the reproduction and leads to the formation of seeds and the fruits. Now see. So flowers help in the reproduction and also leads to the formation of seeds and the fruits. तो फ्लावर का प्लांट पे रिप्रोडक्शन में उनका बहुत बड़ा रोल है और इन्हीं के माध्यम से क्या हो तो सीड्स और फ्रूट्स को क्या है प्रोड्यूस किया जाता है. नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स इज टू फूड बाय इंसेक्ट. नाउ सी. जो फ्लावर से जो नेक्टर निकलता है वो इंसेक्ट्स का क्या हो तो फूड है. अंडरस्टैंड. सो नेक्टर फ्रॉम अ फ्लावर इज यूज्ड एज द फूड बाय द इंसेक्ट्स. Clouds are obtained from the dried unopened flowers buds of flower plant. Flowers are used for the decoration and the making
ऑर्किड्स, हमें तो मालूम है फ्लावर्स किसके लिए होता है, फॉर द डेकोरेटिव पर्पज है, तो बड़े बड़े डेकोरेशन करने के लिए, ये करने के लिए तो फ्लावर्स को क्या है यूज किया जाता है। दे ऐड कलर एंड द फ्रेग्रेंस टू द सराउंडिंग्स, तो सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर रहता है वो बहुत ही क्या होता है खूबसूरत क्या हमें नजर आता है, ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ फ्लावर। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ अ फ्लावर। दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर। तो यहाँ पर अपना क्या होता है चैप्टर क्या है कंप्लीट हो चुका है। तो ऑल स्टूडेंट्स मस्ट बी ट्राई टू सॉल्व द एक्सरसाइज। सभी को अपना क्या होता है एक्सरसाइज क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। ओके, Christopher will be continue on the next session with the new chapter। एक नए सेशन में एक नए चैप्टर के साथ हमें क्या है चलना है। ओके, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी पब्लिक स्कूल और शांति।